Good morning, students. So, due to some reason, today I am now unable to take your Zoom class. So, today I will send the video and please complete the topic while watching the video. So, today our topic is thermodynamical process. We have done up to the means thermodynamic variable. So, the today topic is thermodynamical processes. What do you mean by thermodynamical processes? Meaning any process in which thermodynamical system, we can say that, or thermodynamical variable of the thermodynamical system change. Thermodynamical process meaning, variable that the system that having the pressure, volume, temperature, entropy, enthalpy, etc., that system is known as a thermodynamical system. And the process meaning, there you have need to do the study of the variables, meaning we can say that any process in which thermodynamical parameters या thermodynamical variables, ठीक है, और thermodynamical system change, that is known as a thermodynamical process. Meaning variable, any change in the variable take place, ठीक है, okay. What volume value take place when the gas expand, what pressure value change, ठीक है. So they are saying that to you means any process in which thermodynamical variable of the thermodynamical system change, that is known as a thermodynamical process. So there are the means few processes that we are using in the thermodynamics. Number one is given to you here, quasi static process. Quasi static process meaning the change in the state of the thermodynamical variable are extremely very small. For example, I am having a gas in a container, ठीक है. By giving the heat to that container, the value of the pressure, volume, temperature, entropy, enthalpy, any parameters, any variables are change take place, but that change take place very small. So that process is known as a quasi-static process, or this process is also known as a slow process. Okay, my point, quasi-static process is given here. Next one is isothermal process. Isothermal process, already we have discussed about this. A process in which the pressure and volume of the system, what happen, change, what, temperature is constant. Temperature of the system is constant. They're saying to you that the process in which there is no change in the temperature take place. Whether the pressure volume of the gas change, but the temperature of the gas is remain constant. That type of the process is known as the isothermal process. For example, I am having a gas in a container. This gas having the pressure, this gas having the volume, this gas having the temperature also. When this gas heat provided to it, then what will happen, this gas expand, ठीक है, up to this point dx. What the process is very small, ठीक है. Okay, my point, meaning we can say that the process is slow. The process is slow process. So what happens when this gas is expand, then what will happen, the temperature of the gas is going on decreasing. आपको पता है कि कोई भी गैस अगर एक्सपेंड होगी या कंप्रेस होगी तो वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा प्रोसेस है, इसमें चेंज इन टेम्परेचर टेक प्लेस इज जीरो. इट मीन्स दैट the gas is expand, the work done by the gas take place to expand the gas. Okay, my point. So we can say that, meaning temperature goes on decreasing. टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमें तो टेम्परेचर को क्या बनाना है, कांस्टेंट. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ दिस गैस इज कांस्टेंट, द प्रोसेस मस्ट बी स्लो, so that the time must be there to exchange the heat from where, surrounding to system. So there is a free exchange of the heat that take place from surrounding to system, so that the temperature of this system is remain कांस्टेंट. क्योंकि इस गैस जब ये एक्सपेंड होगी तो इस गैस का क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा,
टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रिमेन अनचेंज होना चाहिए। तो उस गैस का तो टेम्परेचर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो उस गैस का टेम्परेचर मेंटेन कैसे रख सकते हैं हम, अगर फ्री एक्सचेंज होगा कहाँ से, सराउंडिंग से, ठीक है। हीट का एक्सचेंज होगा कहाँ से, सराउंडिंग से सिस्टम में, सो दैट द टेम्परेचर क्या रहे गैस का, रिमेन कांस्टेंट। तो अगर सडनली इफ इट विल एक्सपेंड, दैट व्हाट विल हैपन, देन देयर इज ए नो टाइम लेफ्ट फॉर द सिस्टम टू गेट द टेम्परेचर या हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट। सो this process must be slow so that the free exchange of the heat that must be take place from surrounding to system. Okay, my point. So this type of the process, the process is very slow and there is a free exchange of the heat must be take place from the surrounding to system so that the temperature of the gas is remain constant. So for this purpose, what I have taken here, I have taken a gas that contained in a cylinder that having the conducting walls. Why conducting walls? Because so that the free exchange of the heat take place from the surrounding to system. When the gas is compressed, अब मैंने यहाँ पर गैस को compress लिखा है. When the gas is compressed slowly, then what will happen? The pressure volume change from P1 B1 to P2 V2 अगर compress करते हैं. लेकिन हमें टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है. तो जब इसको कंप्रेस करेंगे देन व्हाट विल हैपन, इसका टेम्परेचर इज गोइंग टू बी इंक्रीज. टेम्परेचर वी डोंट वांट टू इंक्रीज ऑफ दिस सिस्टम. सो व्हाट हैपन, द हीट दैट इज प्रोड्यूस इन द सिस्टम ड्यूरिंग कंप्रेशन that must be transferred to the surrounding. So it is only possible when the process is slow. So there is a free exchange of the heat that is produced during compression that will move to the surrounding so that the temperature remain constant. So that's why I have written here, when the gas is allowed to expand suddenly, then the work is done by the gas and its temperature decrease. But if the process is slow, then what will happen? Then there is a free exchange of the heat take place from the system to surrounding. So what are the condition क्या हो सकती है आइसोथर्मल प्रोसेस की? नंबर वन इज, शाबाश बोलो, देयर शुड बी फ्री एक्सचेंज ऑफ heat between system and its surrounding. अंडरस्टूड? सिस्टम एंड सराउंडिंग में जो है वो फ्री एक्सचेंज होना चाहिए. ओके, सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर must be diathermic wall. This is the first point. Second point is, the system must be compressed. चाहे आप compressed हो और expand, ठीक है, very slowly. Otherwise what will happen, fast it will happen, then there is a no time gap between the system and the surrounding to exchange the heat between each other. Okay, my point. So this is the condition for isothermal process. Next one is del T, change in temperature must be 0. This is the fourth condition. Fifth condition is specific heat capacity. Specific heat capacity during isothermal process. Isothermal process क्या होनी चाहिए, आपको पता है, S इज इक्वल टू Q बाय M डेल्टा T. So there is a no change in temperature, so it will come Q by 0, meaning anything by 0 is infinite. So its specific heat capacity must be infinite. Okay, my point. So this is given here in isothermal process. Now next process is adiabatic process.
एडियाबैटिक प्रोसेस मीनिंग ए प्रोसेस, ठीक है, इन विच प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर भी, ओके, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज what, no exchange, but no exchange of heat between system and its surrounding take place, meaning there is a no chance to, ठीक है, exchange the heat between the system and its surrounding. So for this purpose what I have taken, for example, I am having a n moles of the gas that is present in a container, that having the pressure, that having the volume, that having the temperature P1, B1 and T1, and this wall of the container is adiabatic. This wall of the container is adiabatic. Adiabatic wall meaning no exchange of the heat take place from the system to surrounding. And the piston that you have, that is also a frictionless piston and movable piston. Okay, my point? Understood? So they are saying to you that, and this piston is also a insulated piston that does not allow the heat to pass through it, like adiabatic. So what you can say, that this wall is insulated here and the piston is also insulated piston. When this gas is compressed, अगर मैं इस गैस को compressed करूं suddenly, then what will happen? It will compress dx. तो इसके जो प्रेशर और वॉल्यूम में और टेम्परेचर में चेंज आएगा, दैट इज P2V2, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज एंड टेम्परेचर इज आल्सो चेंज बाय प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज, बिकॉज व्हेन यू कंप्रेस दिस, ठीक है, डाउन साइड, then what will happen? Work done on the gas take place, then what will happen? Its pressure is changes, volume भी कम हुआ है, and this gas is compressed suddenly. So you know very well that there is a no chance for the heat to move from system to surrounding, because all the walls, the walls are adiabatic, piston are adiabatic, so there is a no chance that the heat will be exchanged from system to surrounding. तो हीट कहाँ रह जाएगी? जो भी इसमें प्रोड्यूस हुई है आफ्टर कंप्रेशन, जब कंप्रेस करेंगे तो मोलिक्यूल क्या है, एक दूसरे के क्या आएंगे, क्लोज आएंगे. इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी. इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, then what we can say, that means this process is not isothermal, this process is adiabatic. And also why adiabatic? Because the temperature that is increased here, that means increase the heat of the system, and that heat does not expand, oh sorry, exchange from system to surrounding, बाहर नहीं जा पा रही है, तो हीट क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द एडियाबैटिक प्रोसेस. इफ दिस गैस इज एक्सपेंड सडनली, सो वर्क डन बाय द गैस सडनली एक्सपेंड हो रही है, तो मोलिक्यूल एक दूसरे के क्या जाएंगे, दूर जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या होगा, गैस का डिक्रीज होगा. और जो इसमें हीट का लॉस हो रहा है, ठीक है, दैट इज नॉट compensate by taking the heat from the surrounding to system, because balls are adiabatic, there is a no exchange of the heat. So यहाँ पर जो सिस्टम की हीट है, दैट उसमें क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा. ओके माय पॉइंट, कि अगर हीट एक्सचेंज ही नहीं होगी बाहर, तो हीट के में क्या चेंज आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा. और जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी आपकी हीट है वो बाहर नहीं जा पा रही है, ना एक्सचेंज हो पा रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पर जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है. कहाँ, सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में. तो हम बोल सकते हैं दिस प्रोसेस इज ए एडियाबैटिक प्रोसेस है. सो व्हाट आर द कंडीशन, कंडीशन क्या है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस,
टेम्परेचर बढ़ेगा जब आप इसको कंप्रेस करेंगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन हीट का एक्सचेंज बाहर नहीं हो रहा है, तो हीट क्या रहेगी यहाँ पर, रिमेन कांस्टेंट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नंबर टू क्या है कि यहाँ पर जो है, जो हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो वी कैन से दैट मीन्स द प्रोसेस, ठीक है, शुड बी फास्ट। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एम इंटू डेल टी। नो एक्सचेंज ऑफ द हीट, del q is no, zero, so anything divided by zero we can say that infinity, but 0 divided by something is equal to 0, so its specific heat capacity is also equal to 0. So this is given here in adiabatic process. Adiabatic process में क्या बोला है कि temperature, volume और pressure is change, but the value of the exchange of the heat between the system and surrounding is 0, meaning q is equal to 0. हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि q क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब हमने गैस को कंप्रेस किया है, एक्सपेंड किया है सडनली, तो क्या हुआ है यहाँ पर, अगर एक्सपेंड सडनली हुई है, वर्क इज डन बाय द गैस, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है, सिंस वॉल्स एंड पिस्टन आर इंसुलेटेड है, सो व्हाट यू कैन से दैट नो हीट कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कूलिंग टेक प्लेस हो जाएगी। तो व्हेन कंप्रेस सडनली, तो सेम चीज है, वर्क डन, ठीक है, ऑन द गैस, then its internal energy increase, then what will happen, temperature increase, but no exchange of the heat take place from the system to surrounding or surrounding to system, आपको पता है, then q value is equal to 0. Okay, my point understood? So this is only given here in adiabatic process. Thank you.